नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तेज रफ्तार खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से उसका रुख कर लेते हैं। आलोक कुमार सिंह एसएचओ विकासनगर बनाए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसएचओ विकासनगर विपिन सिंह निलंबित किए गए और विपिन सिंह की जगह पर आलोक कुमार सिंह नए एसएचओ विकासनगर विपिन सिंह निलंबित किए गए। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। विपिन सिंह की जगह पर नया नाम सामने आया है और एसएचओ विकासनगर विपिन सिंह निलंबित किए गए। बड़ी खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर, आलोक कुमार सिंह एसएचओ विकासनगर बनाए गए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसएचओ विकासनगर विपिन सिंह निलंबित किए गए। बड़ी जानकारी, विपिन सिंह की जगह आलोक कुमार सिंह नए एसएचओ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एसएचओ विकासनगर विपिन सिंह को निलंबित किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और विपिन सिंह की जगह पर आलोक कुमार सिंह नए एसएचओ बनाए गए। एसएचओ विकासनगर विपिन सिंह निलंबित किए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, आलोक कुमार सिंह एसएचओ विकासनगर बनाए गए। एसएचओ विकासनगर विपिन सिंह को निलंबित किया गया। विपिन सिंह की जगह पर आलोक कुमार सिंह नए एसएचओ बनाए गए। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एसएचओ विकासनगर विपिन सिंह को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, पूरी जानकारी क्या है? एसएचओ विकासनगर विपिन सिंह को निलंबित किया गया है। देखिए, आलोक सिंह जो अभी तक हजरतगंज के सुल्तानगंज चौकी पे चौकी इंचार्ज रहा करते थे, अब उनको पुलिस कमिश्नर ने विकासनगर थाने का नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है। वहां पर इनकी स्टेशन अफसर के तौर पर तैनाती की गई है, क्योंकि कल देर शाम ही पुलिस कमिश्नर ने विकासनगर एसओ विपिन सिंह और उसके साथ साथ चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार को निलंबित कर दिया था। और उसी इलाके में 29 नवंबर को एक महिला के साथ पर्स लूट की वारदात हुई थी और 4 दिन बीतने के बाद भी उस घटना में ना तो अपराधियों का सुराग मिला था, न उनकी बाइक का कुछ पता लगा था। तो अब ये कहा जाएगा कि नए एसओ की तैनाती के बाद में उस लूट की घटना का सफल अनावरण करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक टास्क दिया आलोक सिंह को कि जल्द से जल्द उस घटना का खुलासा किया जाए। और खाली पड़ी कुर्सी पे एक थानाध्यक्ष की तैनाती भी कर दी गई है। और आलोक सिंह जो लंबे समय से हजरतगंज में थाने में तैनात थे, सुल्तानगंज चौकी इंचार्ज, उनको थानाध्यक्ष विकासनगर के रूप में तैनाती मिली है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर तैनाती मिलने की बात सामने आई। शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आई है। विपिन सिंह की जगह पर आलोक कुमार सिंह नए एसएचओ बनाए गए। और यह अहम खबर आपको हम बता दें। और एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से ही बताते हैं, जहां पर एयरपोर्ट के कार्गो में मिला नवजात बच्चे का शव। डिब्बे में पैक करके विमान से लाया गया था शव। कुरियर कंपनी के द्वारा डिब्बे में पैक करके लाया गया शव। कुरियर एजेंट को कार्गो कर्मचारियों ने किया सीआईएसएफ के हवाले। कार्गो के स्कैनिंग के दौरान मिला नवजात का शव। सीआईएसएफ कुरियर एजेंट से कर रही पूछताछ। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कुरियर एजेंट को कार्गो कर्मचारियों ने किया सीआईएसएफ के हवाले। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुरियर कंपनियों के द्वारा डिब्बे में पैक करके लाया गया शव। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कार्गो के स्कैनिंग के दौरान नवजात का शव मिला। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुरियर कंपनी के द्वारा डिब्बे में पैक करके लाया गया शव।
कुरियर कंपनी के द्वारा डिब्बे में पैक करके लाया गया शव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्गो की स्कैनिंग के दौरान मिला नवजात का शव। शिवा शर्मा हमारे साथ में एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवा, कुरियर कंपनी के द्वारा नवजात बच्चे का शव यहां पर सामने आया है कार्गो में, क्या पूरी जानकारी है फिलहाल? क्या जांच में कुछ अब तक सामने आया? शिवा, आवाज मिल रही है आपको? जी गरिमा जी, सीआईएसएफ कुरियर कंपनी से अब पूछताछ कर रही है। एक नवजात बच्चे का शव कार्गो में मिला है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए गरिमा, शिवभरण यादव नाम का एक जो कर्मचारी है, जो कोरियर बॉय है, वो ब्लू डार्ट कंपनी में इस बच्चे का जो शव था उसको एक डिब्बे में भर करके उसको मुंबई भेजना था, नवी मुंबई, जहां पर इस भ्रूण का परीक्षण होना था। और गलती से वो कार्गो एयरपोर्ट पे, जहां पर उसको किसी और पैकेज की डिलीवरी करनी थी, वो वहां पर उस भ्रूण को छोड़ आया था। और तभी जब सीआईएसएफ के लोगों ने उसकी स्कैनिंग, जब उस माल की स्कैनिंग की, तब उनको एक अजीब तरीके की चीज मिली उस बॉक्स के अंदर। जब उन्होंने खोला तो उसके अंदर बच्चा निकला था। तो तभी इस बात को लेकर के थोड़ी सी अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार एयरपोर्ट पे इस तरीके का बैगेज कौन छोड़ गया है। जब जांच की गई तो शिवभरण यादव का नाम सामने आया। तो अब पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर के पूर्ण विराम लगा दिया और ये कहा है कि महज गलती की वजह से हुआ है। और कोरियर बॉय जिससे पूछताछ की जा रही थी उससे पूछताछ की गई है। और इसको रास्ते के जरिए, यानी कि रोड के जरिए, इसको ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के द्वारा नवी मुंबई ले जाया जाना था। लेकिन ये गलती की वजह से उस एयरपोर्ट पर पहुंच गया था, जहां पर इसका बॉक्स खोलने के बाद बच्चे का भ्रूण मिला था। बहुत शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर नवजात का शव मिलने की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको लोकसभा की कार्यवाही दिखाते हैं। మనం చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అనేక రకాల రాజకీయ కారణాలను కూడా ఈ సరిహద్దు సమస్యను పరిష్కరించడంలో ప్రధాన భూమిక నిర్వహించడం జరిగింది. 2012లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానాన్ని రూపొందించి WNCCని కూడా రూపొందించి భద్రతా దళాలతో కూడా తెలియజేయడం. ఈ విషయం గురించి మళ్ళీ పూర్తిగా to ensure peace and tranquility. అక్కడ పూర్తి శాంతిని పునరుద్ధరించడమే ప్రధాన ధ్యేయం. तो लोकसभा से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लोकसभा की कार्यवाही जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां पर अहम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। We were and we remain very clear that the three key principles must be observed in all circumstances. One, both sides should strictly respect and observe the LAC. Two, neither side should attempt to unilaterally alter the status quo. And three, agreements and understandings reached in the past must be fully abided by entirety. Members would appreciate that as a result of the sustained tension and specific developments in the border areas, our overall relationship with China was bound to be impacted adversely. In the new circumstances, it was obviously not possible to continue the normal exchanges, interactions, and activities as in the past. In this regard, we made clear that the development of our ties were contingent on the principles of mutual sensitivity, mutual respect, and mutual interest. Throughout this period, honorable members would also be aware that government has maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. The combination of a firm and principled stance on the situation in border areas, as well as a clearly articulated approach to the totality of our ties, have been the foundation of our engagement with China for the last 4 years. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward.
Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague, Raksha Mantriji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. The interactions were naturally very tightly coordinated with a combined presence in the negotiations of both diplomatic and military officials. Since June 2020, 17 meetings of the WMCC and 21 rounds of SHMC have taken place. So, in this background, I would like, sir, to inform the House today about the agreement reached on 21 October 2024 regarding Depsang and Demchok. The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers for these recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in both WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs area. In the lead up to the October 21 agreement, I had discussed both the specific disengagement issue as well as the larger relationship with my Chinese counterpart in Astana on 4 July and Vientiane on 25 July. Our national security advisors, ours and the Chinese, met in St. Petersburg on 12 September, and the problem in these two areas pertained primarily to obstructions of our long-standing patrolling activity. In Demchok, there was also the question of access by a nomadic population to traditional grazing grounds as well to sites of significance to the local people. As a result of this recent understanding, arrived at after intensive negotiations, resumption of patrolling to the traditional areas is underway. It was initially tested by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild the relationship. The special representatives are also to oversee the management of peace and tranquility, besides exploring a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I recently held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18th. Raksha Mantriji has also met the Chinese Defense Minister Dong Jun at the ASEAN Defense Minister ADMM Plus meeting in Vientiane on November 20. The two ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation, and the requirement of strengthening confidence-building measures. They agreed on the importance of continuing meetings and consultations at various levels. Sir, the House will remember that on October 21, the October 21 agreement is the latest in the series of an understanding in regard to the resolution of the situation at various friction points in eastern Ladakh. In the aftermath of the events in May-June 2020 and the initial disengagement in Galwan Valley in July 2020, there was a foreign ministers meeting in Moscow in 10 September 2020. The government's position at that time was that the immediate task was to ensure comprehensive disengagement of troops in all the friction areas. It was emphasized that the large concentration of troops along the LAC was not in accordance with the 1993 and 1996 agreements. The Indian side, it was made clear, would not countenance any attempts to change the status quo unilaterally. We also expected that all agreements and protocols pertaining to the management of the border areas would be scrupulously followed. Sir, through you, I would like to inform the House that disengagement has been achieved in full in eastern Ladakh
through a step-by-step process, culminating in Depsang and Demchok. With the task of disengagement completed, it is now our expectation that discussions would commence with regard to the remaining issues that we have placed on the agenda. For the benefit of honourable members, I would also flag to your attention previous positions articulated by the government in Parliament on this issue. On 15th of September 2020, Raksha Mantri ji had made a detailed statement on Chinese attempts to transgress the LAC and the appropriate response given by our armed forces. On the 11th of February 2021, Raksha Mantri had again briefed the House about our disengagement agreement in the north and south banks of the Pangong Lake. Thereafter, in August of 2021, a third phase of disengagement took place in the area of Gogra, whereby troops would henceforth be in their respective bases. The next step took place in September 2022, pertaining to the Hot Springs area. Again, forward deployments ceased in a phased, coordinated and verified manner, resulting in the return of troops to their respective areas. The most recent agreement, the October 21 agreement, comes in the wake of the earlier ones. It completes the first phase of what we had agreed to in Moscow in September 2020. As members are aware, there is a long history of frictions, transgressions and face-offs in several sectors of the India-China border. This goes back to Barahoti from 1954, to Longju in 1959, to Sumdurongchu from 1986-1995, and Depsang in 2013, amongst others. In the past, earlier governments have agreed to a range of steps to diffuse situations that have arisen at different times, including offers on our side to create demilitarized zones, limited non-patrolling zones, relocation or withdrawal of posts, disengagement of troops, and dismantlement of structures. Different locations have seen different solutions being examined. Where the October 21 understanding is concerned, our objective has been to ensure patrolling as in the past to the relevant patrolling points, as well as resumption of grazing by our civilians as per long-standing practice. This is indeed what we have agreed upon in regard to Depsang and Demchok. In a few other places where friction occurred in 2020, steps of a temporary and limited nature were worked out based on local conditions to obviate the possibility of further friction. This, I must stress, applies to both sides and can be revisited as the situation demands. In that sense, our stance has been resolute and firm and serves our national interests fully. The ensuring of our national security in this manner is the result of cumulative and coordinated endeavours of many parts of the government, obviously centred around our defence and security forces. The competence and professionalism of our services in this period was displayed in our speedy and effective counter-deployment. In the negotiations with China, the defence and diplomatic arms worked in lockstep to ensure that our national interests were comprehensively met. Sir, in that context, the House would also recognise that there has been a significant improvement in the border infrastructure, which has made such effective counter-deployment possible. This is reflected, amongst others, in the increase of border infrastructure allocations in the last decade. The Border Roads Organisation, BRO, alone has incurred 3 times the expenditure level of what it was a decade ago. Whether it is the length of the road networks, of the bridges or the number of tunnels, there has been a substantial increase over the earlier period. Notable milestones in recent years include the Atal Tunnel to Lahul Spiti, the Sela and the Nechifu tunnels to Tawang, the Umlingla Pass Road in southern Ladakh, and the extended opening of the Zojila axis. Work is progressing on some strategically important roads and airfields in Ladakh. The adoption of new technologies in high altitude, remote, inaccessible and perforest areas has also been significant. All of this reflects the government's firm commitment to protecting our borders and ensuring that our armed forces get the facilities and the logistical support that they deserve. Finally, sir, let me share with honourable members our expectation
regarding the direction of our ties with China in the near future. Our relationship had progressed in many domains, but was obviously negatively affected by recent events. विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।